So hi Harsh, hi bhai. Hope you are doing well. Thank you bhai. Thank you for sparing your time. Welcome to the Space Talk. तो just to give you a context and to everyone watching this, तो हम ट्राई करेंगे कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता पाएँ आपको सभी आर्टिकलशिप डोमेन्स का जिसमें समवन कैन डू हिज आर्टिकलशिप एंड दिस इज गोना बी रेलिवेंट फॉर समवन जो मे बी अभी अपना इंटर क्लियर करा है एंड इज लुकिंग फॉर डोमेन्स कि उसे किस में आर्टिकलशिप करना चाहिए or maybe for a CA who is trying to switch between his domain and want to get some practical insights. Because I feel जब हम theoretical पढ़ते हैं and हम practical करते हैं, I think there is a lot of difference in it. So we'll start with stat audit. I think this is the most favorite of us. Everyone wants to do stat audit, but जब वो पढ़ाई की बात आती है तो everyone hates it, but everyone loves doing it practically. So we have with for stat audit we have with us Harsh. So over to you, bhai. Maybe we can start with a brief intro of you. Yeah. So thank you, Antariksh, for inviting me to Space Talk. And I would like to keep the discussion free flow as a there is no set pattern. Yeah, sure. So for my introduction, my name is Harsh Yadav. I have born and brought up in Delhi. I have done my articleship from EY in the start audit domain for approximately a year and 2 months. Mm-hmm. And currently I am pursuing my industrial training from the World Bank. Nice. Sure. So, bhai, thanks for introducing. So, let's start with like the basic. What do you mean by start audit? So, as someone, जैसे मैंने कभी I have never done practically start audit. तो what I mean like what I understand by start audit कि जब मैं कोई कंपनी का रिजल्ट देखता हूँ लेट्स से उसमें सेल्स रिपोर्टेड होता है 10 रुपीज़ तो अगर वो नंबर ऑडिटेड है तो आई फील कि ये नंबर सही होएगा मतलब इट वुड नॉट बी 12 इट वुड नॉट बी 8 मतलब वो 10 का नंबर सही है आई नो देयर आर इनहेरिट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जो हम पढ़ते हैं बट स्टिल आई कैन ट्रस्ट दैट नंबर सो मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड तो भाई व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्ट ऑडिट तो अगर हम लेमैन टर्म्स में ब्रेक डाउन करें फॉर समवन जो पहली बार इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि स्टार्ट ऑडिट क्या है और उसमें काम क्या होता है हम्म तो एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न और जितना मैंने पूरा अपना 14 मंथ्स के ड्यूरेशन में सीखा है हम्म so whatever the company is preparing the financial statements हम्म basically we are betting on that okay the numbers which are reported by them are true and fair and of course as by definition जो इंटर में भी पढ़ाया जाता है कि audit gives a reasonable assurance and not an absolute assurance हम्म so ठीक है there might be some fluctuation but reasonably we are assuring that whatever numbers are reported whatever policies they are reported are fine and the numbers are true and fair हम्म तो अगर एक लाइन में सम अप मैं करना चाहूँ तो जो भी कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है कि वी आर दिस बेसिकली अ स्टार्ट ऑडिटर इज वेटिंग कि ओके दिस इज ट्रू एंड फेयर इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट हम्म एंड ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट देन रिलेट्स टू द फैक्ट कि कंट्री पे कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होते हैं इंडिया में इंडेस हो गया एएस हो गया तो हम्म उन फ्रेमवर्क्स के अंदर रहते रहते ही वी आर वेटिंग कि अच्छा let's suppose a company is applicable to India तो उनके financials बने हैं that is good but उसका presentation disclosure everything should be as per the guidelines of the India और let's suppose the companies act में भी जो additional requirements है या कारों में additional requirements है तो वो सारी कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही तो ओवरऑल एक लाइन में तो मैं यही सम अप करना चाहूंगा कि वी आर वेटिंग दैट वट एवर दे आर प्रेजेंटिंग इज ट्रू। एंड भाई जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो कि जैसे आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट वर्किंग पेपर्स मतलब जितनी मेरी स्टार्ट ऑडिट लाइक आई हैव फ्रेंड तो एवरीवन इज सेइंग कि भाई ये वर्क पेपर बनाने हैं समटाइम दे लाइक कि पिछले साल वाले से एडिट कर देंगे बस बट लाइक व्हाट इज अ वर्क पेपर लाइक यू प्रिपेयर वर्क एरिया फॉर आई थिंक वर्क पेपर फॉर एवरी एरिया सो मे बी यू कुड टेल अ बिट अबाउट अ वर्किंग पेपर ओके सो वर्किंग पेपर इज बेसिकली कि आपका इट वुड बी बेटर अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेके समझाऊं हम्म अगर लेट्स सपोज आपका फाइनेंशियल में कोई एक एक्सपेंस आ रहा है लेट्स सपोज लीगल एक्सपेंस और हम्म whatever power and fuel electricity हम्म any expense is coming so it must have some or the other backup right तो उस वर्क पेपर में हम उस एक्सपेंस का लेट्स सपोज 1000 रुपीज का एक्सपेंस आ रहा है या फिर 1 करोड़ का एक्सपेंस आ रहा है तो उस 1 करोड़ का इन एंड आउट
its analysis, including vetting that it is correct or not, and it is matching with the number which is disclosed in financial. तो Hmm. उस पूरे वर्क पेपर में हम उसका पूरा डिटेल ब्रेकअप वी डू एंड वी टेस्ट इट. तो अगर अगेन एक एक्सपेंस अगर मैं लूँ, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो Hmm. वट एवर software the company is following, depending upon the size, some company might be following tally, some company, Hmm. let's suppose the company which I was auditing, part of the audit team, that uses SAP. So Hmm. SAP is also used for accounting and all. Hmm. So SAP gives us a dump. So dump technically means कि आपका उस expense से related जितना भी entries pass हुआ होगा during a certain period, you have an option to extract the dump from this Hmm. date to that date. So for a certain period, we can, as it is, extract what are the entries which have passed during the year. Hmm. We would take that out, and that is our base. We Hmm. will try to then reconcile that dump with the number disclosed in financial. क्योंकि अगर हम लेमन टर्म्स में भी समझना चाहें तो टेक्निकली यही होगा ना कि हमने जितनी एंट्रीज पास किया ड्यूरिंग द ईयर, Hmm. वो जितना का खर्चा बनता है दैट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल. अगर उससे कुछ डिफरेंस है देन वी शुड हैव द रीजनिंग फॉर दैट. माइट बी कि वो कहीं से रिक्लासिफाई हो गया हो फ्रॉम वन हेड, इट माइट बी क्लासिफाइड टू सम अदर हेड बिकॉज स्टार्टिंग में Hmm. वो गलती से वहां पे डल गया हो. Hmm. तो दैट कैन बी द. So once that dump is extracted, the first point is extracting the dump. Hmm. So we extract the dump. We also take its IPE. So IPE is basically information provided by client or Hmm. information provided by entity. So we Hmm. take a screenshot of the SAP that okay, whatever you have given us in Excel form Hmm. is what the software has generated. Hmm. So that's the first point. When IPE is done, we start to take out our samples and then analyze the dump in itself. So Okay. sample may again every firm has its own policy of how to take out samples because I don't think so. ICI has given as such कि okay you have to pick out this much samples from that one. So अपनी हर फॉर्म की अपनी अपनी अलग पॉलिसीज होती है हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल और उसका सैंपल साइज कितना होगा. लेट्स सपोज अगर 100 करोड़ का खर्चा है तो मे बी सम वन थिंग 60 करोड़ कवर करना या 60 करोड़ वेट करना वुड बी अ फाइन Hmm. रीजनेबल एश्योरेंस एंड सो. Hmm. तो देन उस डंप को पहले हम फिल्टर आउट करते हैं वट एवर अननेसेसरी एंट्रीज आर लेट्स से कॉन्ट्रा एंट्रीज आर देयर दैट Hmm. आर कैंसिलिंग आउट इन themselves. लेट्स सपोज द प्रोविजन एंट्रीज. Hmm. लेट्स सपोज ईयर एंड पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया तो वुड बी पासिंग एन एंट्री ऑन प्रोविजन जो नेक्स्ट मंथ Provision. में रिवर्स हो जाएगी. True. True. Hmm. अब टेक्निकली वो जो एक्सपेंस है दैट शुड बी टेस्टेड इन प्रोविजन, राइट. Hmm. प्रोविजन का अलग वर्क पेपर बनेगा एंड वो उसमें टेस्ट होगा. Ah, okay. तो for our dump purposes we remove it from that. तो फर्स्ट Okay. पॉइंट पे डंप लेना उसका आईपी करना, देन उसमें से जो भी नॉन रेलेवेंट एंट्रीज है आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं या Hmm. फिर कहीं और टेस्ट होनी चाहिए या फिर रिक्लासीफाई हो गई कहीं पे, वी रिमूव इट एंड देन उस क्लीन डंप पे वी एक्सट्रैक्ट सैंपल्स. Hmm. डिपेंडिंग अपॉन द फर्म्स पॉलिसी सैंपल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं. Hmm. उन सैंपल्स की जो जो सपोर्टिंग चाहिए इन योर माइंड जो आपको लगता है कि उस खर्चे को टेस्ट करने के लिए या वट एवर एरिया आई एम टेकिंग एक्सपेंस एज एन एग्जाम्पल. इट माइट बी ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, बैलेंस शीट आइटम्स एज वेल. Hmm. तो वट एवर उसको टेस्ट करने के लिए आपके जजमेंट में बेस्ट सपोर्टिंग होगी यू आस्क दैट फ्रॉम क्लाइंट Hmm. and then you test it if any discrepancy is there is some certain mismatch is there, you then pose the queries to the client, see, okay, what is the reason behind that? And then also you also document the reason in your work paper only. That okay, let's suppose this was the amount of the supporting, this was the amount in the dump. So what is the rationale for the differences based on whatever the client has? I think working So papers. Yeah. Yeah. Sorry. Please go ahead. I guess working paper is the whole audit in itself. हाँ वही मैं कहने वाला था लाइक इट सुनने में इट साउंड की इट कुछ सिंपल सा डॉक्यूमेंट होएगा बट इट फील लाइक इट्स अ कंप्लीट ऑडिट पूरा ही ऑडिट हो गया हमारा. It's correct. Everything is done in working paper. Each and every small detail working paper में ही document होता है. I guess from it is irrespective of the firm size, from even small to mid size to large firm, everything is documented in working paper only. उसके अलावा some other things are there which are also documented and filed, but जो major financial के number you are betting as a part of start audit that is done in the working.
हाँ। तो उसमें सैम्पल टेस्टिंग वाज वन पार्ट एंड द अदर पार्ट इज आप एनालिसिस करो उसका. तो हम्म अगेन, इफ लाइक सपोज लास्ट ईयर से योर एक्सपेंसेस इंक्रीज और डिक्रीज, हम्म significantly increase or decrease, so you must also know the rationale behind it. You हम्म can further analyze on the basis of geography की, let's suppose a certain company has plants in 10 states. We हम्म can also analyze कि उन 10 स्टेट्स में उस एक्सपेंस का बाइफरकेशन कितना था, हम्म लास्ट ईयर में वो कितना था, करंट ईयर में कितना है. जैसे सपोज अ प्लांट हैज क्लोज डाउन, उसकी वजह हम्म से उसका एक्सपेंस में डिक्रीज है या फिर परसेंटेज में हम्म डिक्रीज है. तो दैट इज ऑल्सो डन इन द वर्क पेपर. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट which ultimately verifies the number which is matching in the financial. So work paper में you start with dump, testing your whatever analysis, हम्म and starting जो first step होता है आपके work paper का, that is lead. So it is called lead, जिसमें आप मैच करके दिखा रहे होते हो कि your number in the financials is matching with whatever number that is coming in the subsequent tab, हाँ, and it is all interlinked. उसे क्या कहते हैं? डीड, डी डबल ई डी, राइट? No, no, lead, Lead. First one is lead, हाँ, ओके। second one is sub lead. सब लीड, हाँ, ओके। Okay. And by just one thing, when you were telling about expense ना, तो just one thing came into my mind कि let's say कंपनी ने 10 रुपए का एक्सपेंस रिपोर्ट करा, तो हाउ डू यू गाइस नो कि वो कंप्लीट है? मतलब इट मे बी 20 हो, वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक्सपेंस ही ना रिपोर्ट करा हो, तो हाउ डू यू गाइस चेक दैट? That completeness of the हम्म expense you are saying. हम्म हम्म Okay, then again, uska bhi, if they have reported 10 instead of 20, हम्म if they are sufficing it with the supporting, then that's fine. Because from an auditor, so that comes under inherent limitation, I guess. हम्म हम्म If someone is reporting less, so अगर last year से it would be far less, then obviously it would create a questionable thing कि okay, हम्म last year this was so much, how come it can हम्म bring down to this much in the current year. And also you have to have a reasonable basis, right? Let's suppose if a power and fuel or electricity expense is there, then हम्म then it is linked to production. हम्म इसलिए अगर आपका प्रोडक्शन का नंबर ज्यादा दिख रहा है, तो इट कांट बी राइट कि आपका हम्म उससे डायरेक्टली लिंक्ड एक्सपेंस कम हो रहा होगा करंट ईयर. अगर आपकी प्रोडक्शन 10% से बढ़ी है, तो आपका वो खर्चा भी एनीवेयर बढ़ा ही होगा, आपको कम नहीं हो सकता, राइट. तो मेक सेंस। इंटरलिंकेजेस विद interlinkages with other areas also helps to identify कि okay, it is reasonably in line with other things which it is linked to. हम्म भाई, अगर सेल्स बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बढ़ना ही चाहिए, ऐसा लाइक दैट। बढ़ना ही चाहिए, हाँ। right. Otherwise profit margin बढ़ा होगा, which is also you know visible, right. या तो एज अ स्टार्ट ऑडिटर आपको उस सारी चीज की तो विजिबिलिटी होती है, तो एनीवेज यू कैन वेट फ्रॉम अदर एरियाज. हम्म ओके, दैट्स नाइस। एंड भाई जस्ट मे बी आई विल जस्ट सम अप, अगर मैं एक समरी करूँ स्टार्ट ऑडिट की, जितना मेरे को समझ आया, आई थिंक एक तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बिकॉज लेट्स से अगर आप किसी कमोडिटी बिजनेस का वो कर रहे हो ऑडिट, तो यू विल बी नोइंग कि लेजर इन मार्जिन होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा होना चाहिए, तो आई थिंक एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देन आपको एक्यूरेसी चेक करना, लाइक बेस्ड ऑन मटेरियलनेस, मतलब कोई कितना मटेरियल है तो उसकी टेस्टिंग उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई थिंक इससे एक तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिलता है, प्लस फाइनेंशियल ऑल्सो, मतलब यू गेट टू प्ले अराउंड विद नंबर्स। एंड देन थर्ड पार्ट आई थिंक कंप्लायंस पार्ट ऑल्सो, मतलब हम एफ आर पढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक नंबर, मतलब हमें पता है सेल्स का ये नंबर है, बट वो किस लाइन आइटम में रिपोर्ट होना चाहिए, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी मटीरियल व्हेन यू आर डूइंग ऑडिटेड। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन। तो एनीथिंग विच यू लाइक टू ऐड जो मैंने मिस किया हो इसमें, मतलब दिस इज आई फील स्टार्ट ऑडिट, मतलब जैसे अगर जो हमने स्टार्टिंग में बात करा था, 10 रुपए का सेल है तो दैट इज 10। तो करेक्ट. So I guess pretty much you have summed it up. Some things I would like to add in this. हम्म That is coherence between theory and practical is a lot in start audit. That साथ के साथ जैसे I started studying FR in my first year of the articleship. So हम्म if you are doing it, sincerely, so you can actually correlate कि if you are doing an in-depth line, so you can actually relate कि ऐसे ही जैसे थ्योरी में जैसे लिखा है वैसे ही एक्चुअल में रिपोर्टिंग होता है या नहीं होता है, जो हम्म आपको बहुत विजिबली.
लीज का इंडेक्स है, तो देखते हैं ना कि शॉर्ट टर्म लीज इज नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड एज लीज, वो रेंट की तरह यू एक्सपेंस इट आउट। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो दिखेगा कि अगर 1 साल से कम की लीज है या शॉर्ट टर्म वैल्यू की लीज है तो उसको वो लीज नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में लिखा हुआ है कि नहीं दिखानी। तो प्रैक्टिकल कोहेरेंस बहुत जाता है। ऑडिट भी जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ओके, मेरा आर्टिकलशिप तो 14 months I have completed and then shifted to industrial training. तो ऑडिट मैंने उसके बाद में करना स्टार्ट किया था। बट ऑडिट भी एज एंड व्हेन यू स्टडी सो यू कैन एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप आप रिलेट कर सकते हो कि ओके, थ्योरी ऑडिट में लिखा हुआ है कि ऐसे करना है, कि प्लानिंग में ये 4 चीजें करनी है, थ्रेशोल्ड आपको ऐसे डिफाइन करना है, फिर अगेन थ्रेशोल्ड मतलब एक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे टेस्टिंग थ्रेशोल्ड ऐसे बनेगा, विच इज एक्चुअली डन इन द ऑडिट। तो जो भी आप पढ़ रहे हो दैट इज एक्चुअली डन इन द ऑडिट, सो इट इज अ slightly good thing कि आपको monotonous feel नहीं होगा while you're studying. You can actually correlate those things. So that is good part. And for a starter, I guess anyone who's starting in start audit, the key or the base thing is to learn Excel. So Excel is the base of everything which is being done in the start audit. बाकी जो भी आप reasoning, rational, compliance check कर रहे हो, indices check कर रहे हो, that comes on a secondary part. As and when you join it, आपको अगर एक्सेल आता है अच्छे से तो दैट वुड बी अ वेरी गुड एज, क्योंकि आप फिर बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। बट इन माई व्हेन आई इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में वन ऑफ माई सीनियर सजेस्टेड मी यूट्यूब वीडियोस टू सी लाइक what all formulas are helpful throughout your journey, so it is better that you start looking at how it is actually applied and all. That's right. And I believe some or other people might have tried after clearing inter, जो भी आपका gap होता है कि I Yes, learn Excel, yes, yes. learn Excel and implement it. But point is that कि that would not sustain in your mind. आपने एक formula देखा, let's suppose sum if है या x lookup, v lookup, whatever, या आपने formula देखा, आपने एक बार apply करके सीख लिया, then it would not be retained in your mind, right? क्योंकि you're not applying it on a daily basis. In Yes. start audit, you get to apply it on every day. So I'd suggest anyone who is uh, actually trying to learn Excel before joining a firm, it would be better if they continuously practice it before actually joining. So then you would be definitely ahead. So let's say I'm sure that now so AI also has developed so much, so you can automatically let's suppose you have learned the formula for X lookup or V lookup, whatever. You can ask AI to generate a data set on which you can apply those X lookup. Yes. You don't have to worry about I have to make a data set first myself, then I'll also apply Excel. So that is slightly boring task कि मैं डेटा भी खुद बनाऊं फिर एक्सेल भी खुद बनाऊं। It's better, so with the use of AI you can generate data sets for I guess everything. So I would suggest कि after your exam time it would be slightly better if you invest some time in learning basic formulas. X lookup, V lookup, H lookup is there. Some ifs are very important. Ifs function, count ifs function. So these are some of the formulas which are used on a daily basis. And in general, also the Excel shortcut. Let's suppose have create a pivot table. So yeah, pivot table is also very Pivot, important. yes, yes. Create a pivot table, slicers and pivot table and all. So these are also all created by as you would know, it is created by keyboard only. You don't have to use the mouse for inserting a pivot table. So I would not expect कि उतना proficiency किसी को आ जाए while learning, before joining the articleship. But it's good if you know how to apply the formulas only, like X lookup, V lookup, sum if and all. That would suffice. And वो तो anyways when you are joining, I guess 3 के अंदर you would be all set in हम्म, Excel. नहीं So अच्छा that is है। fine. So one practical advice would be to go for learning it. नहीं, इट्स नाइस भाई, आई थिंक यू कवर दिस पॉइंट बिकॉज हमारे पास यूजुअली टाइम होता है, मतलब जब हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं प्लस वी आर ज्वाइनिंग दिस टाइम, आई थिंक हम आईटीटी भी करते हैं, दे ऑल्सो टीच अस थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई थिंक हमें प्रैक्टिस करना चाहिए बिकॉज आई ऑल्सो रिमेंबर माई फर्स्ट डे, तब मैंने ऑल टैब सीखा था कि व्हेन यू आर मूविंग बिटवीन टैब तो यू शुड यूज ऑल टैब, एंड इवन माई मैनेजर टोल्ड अस कि द लेस यू यूज माउस, मतलब जितना माउस कम यूज करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, सो ट्राई टू नेवर यूज माउस। तो आई थिंक यस, थोड़ा बहुत इफ यू लर्न प्रैक्टिस एक्सेल, प्लस अभी कुछ दिन पहले ही अभी क्या था ना, हमें ना लाइक वी
एक टूल था हमें, मतलब एक लाइन आइटम था, उसमें नंबर भी था और वो भी था वर्ड, जैसे वन डॉट करके उसका लिखा था। तो हमारा टास्क था उसे हम्म सेपरेट करना। तो ना हम नहीं कर पा रहे थे, हम्म मतलब हमने ऑल डे यूज करा डीलिमिट, बट वो कुछ नहीं हो पा रहा था। देन आई जस्ट टाइप दैट टू अ चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी यूज करा मैंने, और उसने भाई हम्म इतना सही मेरे को दिया ना, उसने आई थिंक बोला सेमी कॉलन डालना होता है उस कॉलम में, और मैंने वो यूज करा और भाई हम्म वो हो गया, अदरवाइज वो हम मैनुअल करते। तो आई थिंक थोड़ा right. वी शुड प्ले अराउंड एक्सेल, बिकॉज एज ऑडिट हम मोस्टली एक्सेल ही खोले रखते हैं, वो कोई टीसी टाइप तो आई थिंक दिस इज अ गुड हम्म पॉइंट। एंड Correct. I also remember the same thing which you pointed out, right? About, let's suppose you pointed out about, separating two things in one cell. So I also faced one of the similar problems in other formula. So I just explained my whole situation to ChatGPT, like, okay, if this is the case, I want this to come yes if any of the cells is yes in the previous cells, and so on. You define the condition. It gives you the exact formula which you yes. can just copy and paste in that cell. You हम्म just drag it, तो आपका काम हो जाएगा. So it हम्म is very helpful in that sense. हमने बहुत अच्छी बातें कर ली। वी नो कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो Hmm. गिव मी गिव मी फ्यू रीजंस व्हाई समवन शुड नॉट जॉइन स्टार्ट ऑडिट और नॉट डू स्टार्ट ऑडिट। आई थिंक प्रेशर वुड बी वन, बिकॉज आई थिंक जब आपका पीक होता है, आई नो कि वो अगले दिन सुबह 4 बजे तक यू आर वर्किंग, सुबह 5 बजे तक, तो भाई गिव अस सम रीजंस कि क्यों नहीं करना चाहिए। Okay. So one of the points we have already covered about the, कि hectic कितना होता है, or let's suppose stretched and long hours, and especially if you are on a audit of a listed client, then हम्म it's become more difficult हम्म because then timelines are more stringent, 30 days, 45 days. You have to finish the whole audit from हम्म planning till end. So हम्म it becomes more difficult to cover it in that span. Then it's like वो पूरा whole month you have to stay up late and all. हम्म So I guess one of the reason would be long hours. If you are willing to put in that, then obviously it's welcome. Second thing is कि that would not be prolonged. मतलब वो long hours would be there for a certain period of time. That not be prolonged. But if you are, consistently switching between assignments which require long hours, हम्म then it might be the case कि आपको for a long period of time you have to put in. हम्म So that can be a drawback in itself. Second thing is it might become monotonous after a certain point of time if you are continuously doing the same areas in the start of. So let's suppose last year you did other expenses, say 4 or 5 expense, or हम्म let's suppose whatever a certain area. Next year are also doing the same area because obviously people would expect you to do that and with a greater speed हम्म because last year you have already done that, right? So हम्म you already know knowledge wise whatever should be done. तो आपका वो learning curve के हिसाब से time कम हो जाना चाहिए. yes, yes. So if you are continuously doing that same areas over and over, so then it would become monotonous and new learnings for software it would become. Mhm. So I guess that can be a drawback, but Okay. that's on you. Like you have to be willing to take and you have to ask for certain new areas and whatever you might interest you. So I guess long working hours is there, monotonous it can become sometimes. These two are there, and overall I feel during my whole more than 1 year, Mhm. everything else depends on the team, right? Yes, true. So what team you get, that's not in your hand, obviously, Mm. but a lot of these factors about how good your working place is or the firm is depends on the team. So fortunately, mine was very good. So the time which I stayed there was pretty much filled with learning and all. Mm. So I would say that thing about cons and all is more team dependent. Mm. Mm. Those are the factors. But inherently, if you are talking about start audit, the monotonous and long hours Mm. are the two factors. So inherently start audit. Okay. तो भाई just a follow up thing कि मतलब I'll just if given a choice, will you still choose stat audit or you will go for any other domain for your articleship? No, so depends on the situation. You're asking me at this point, No, if no. I am given a option or Let's from say the you beginning. let's say you have just cleared CA intermediate exams, you have this experience of 1 point almost 1 years. So will you go for stat audit again for your articleship considering the pros and cons, or you will go for any other domain, maybe FDD, internal audit, like any other?
Okay. So personally, I would again choose stat audit only. Okay. The reason behind is that first thing, I do not obviously know what there in the other domain. Hmm. Second is that I still believe the stat audit has more wide spectrum in terms of opportunities which it provide ahead. Obviously, it is too early for me to say that it provides opportunities ahead, but still I believe the learnings which you get, or the you know type of things which you do, it can be monotonous, but overall developing your mindset, or understanding a business, that Mm-hmm. how these things do. So uska interconnectedness to a lot of fields is higher. Okay. Hmm. So let's suppose internal audit is a separate domain which is very vast, I know, but let's suppose start audit, maybe you are checking internal controls, right? Hmm. Hmm. So a subset, or some part of other domain is also inculcated in that. Hmm. So you get to know about IDT and DT things are also tested in start audit. Yes. I have not done those areas, but anyone who has done, certain, if you have to check the GST part, you have to have knowledge of certain basic things which are done in GST, right? Like 3B में क्या report होता है, 2B में क्या होता है, ITC कैसे मिल रहा है, सेटअप हो रहा है, उन्होंने वर्किंग कैसे बनाया है, you Hmm. have to vet it. तो आपको बेसिक आइडिया उसका होना ही चाहिए. I'm not saying कि डीपली आपको पता होगा कि ओके लीगल केसेस में क्या होता है. That also gives me a certain hint कि there is an area of legal expenses and legal cases in Hmm. any company, right? Hmm. तो इफ यू आर डूइंग दैट, तो उसमें आपको ना एक रेटिंग बताना, मतलब रेटिंग कंपनी ने ऑलरेडी दिया होता है, यू हैव जस्ट टू वेट इट कि इट इज करेक्ट और नॉट, लाइक Okay. प्रोबेबल है कि आप जीत हाँ. केस जीत जाओगे या फिर हारने का कितना रेटिंग है. तो Hmm. समटाइम यू ऑल्सो फॉर योर ओन नॉलेज पर्पज स्टार्ट रीडिंग कि अच्छा केस था क्या. Hmm. तो अगेन आई एम सेइंग कि वो इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा है. लाइक Hmm. द कंपनी ऑन विच आई वाज डूइंग द स्टार्ट आउट, इनका एक आईडीटी का केस था which can actually become a case study and Wow. taught in CA exams. Hmm. So I'm saying कि, और वो आईडीटी का केस था, तो अगेन यू हैव टू सी कि अच्छा इस सेक्शन में ये लिखा था, इसमें ये लिखा था, एंड Hmm. आपको बिजनेस का आइडिया तो है ही, तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पता है, एंड देन यू आर आल्सो कंपेयरिंग इट विद कि आईडीटी में क्या क्या क्लॉजेस. आई गेस इंटरकनेक्टेडनेस इज स्लाइटली हायर, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर विलिंग टू लर्न, और आप कितना कनेक्ट खुद से करना चाहते हो कि Hmm. इस फील्ड का दूसरे फील्ड से कितना कनेक्शन. तो आई गेस उस सेंस में आई वुड अगेन go for it, considering from a articleship point. हाँ, भाई आफ्टर मतलब आफ्टर टॉकिंग टू यू नाउ आई एम फीलिंग कि भाई मैंने क्यों नहीं स्टार्ट ऑडिट करा बट स्टिल तो भाई जस्ट लाइक एज वी नो देर आर लिमिटेड वैकेंसी मतलब लेट्स से इफ आई वांट मतलब मेरे को भी स्टार्ट ऑडिट करना है लाइक आई ऑल्सो थिंक कि इट्स लाइक वेरी मच अलाइन टू मी बट भाई everyone cannot get तो any domain which you think is more or less relevant मतलब होता है ना second best alternative तो what was that in your case मतलब you must also have thought कि what if नहीं मिला start audit तो फर्स्ट तो स्टार्ट ऑडिट प्लान था कि क्या था मतलब लाइक मेरे को तो पता था बिग फोर में जाना है बस जो उन सा भी डोमेन मिल जाए तो हाउ वाज इट फॉर यू. No, so for me, start audit was little planned ahead. ओके. After talking to my seniors, also talking to some of the faculty members as to what all you do in there, and उसके बाद फिर opportunities क्या होती है basis पे उसके, क्योंकि obviously इंटर क्लियर करने के बाद you have absolutely no idea of any domain whatsoever. You हम्म. just have to hear and make a decision for yourself कि आपको क्या लगता है सही. Might be someone has a deep interest in DT, so he can choose DT over it, or IDT whatsoever. So for me it was largely based on the guidance which I received from my seniors, and also the faculty members, and also my own thing कि आईडीटी या फिर डीटी में नहीं कर रहा हूँ, पर हम आर्टिकल से पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं कर रहे, बिकॉज अगेन स्टार्ट ऑफ इट आई बिलीव इज अ वास्ट फील्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, एंड उसका ओवरऑल बिजनेस का व्यू आपको उससे अच्छा मिलेगा. एंड वो रैशनल भी आपका डेवलप होने लगता है धीरे धीरे, बिकॉज यू स्टार्ट टू क्वेश्चन सो मच ऑन लिटिल थिंग्स अबाउट अ बिजनेस. यू गेट टू सी इट, ओके सो ये कैसे हुआ होगा, then ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि आपका डेली बेसिस का वर्क ही यही है, यू हैव टू क्वेश्चन द क्लाइंट as to how this is done, what.
नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप व्हाट, उसके बाद क्या होगा फिर, देन इज इट करेक्ट और नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वट एवर। तो उससे एक रैशनली भी आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो। Okay. So, तो okay, and सेकंड like, बेस्ट ऑल्टरनेटिव yeah, said देन, it. if to answer your first question, so I don't have actually a second best alternative in my mind, but the closely resemblance to start audit would be internal audit, Okay. Hmm. because you get to learn about the processes, and it is also more or less inclined to learning about how a business works. Hmm. Yeah. So the only thing it lacks in a certain area is about the connectedness to the financial, Hmm. ultimately being displayed. Hmm. So maybe someone who is pursuing internal audit, or you know if does not get into stars and get into internal, can put in efforts to try to link it with financial somehow, Hmm. because ultimately whatever companies are auditing, if it's listed, then the financials would be out, so he can okay know that what is the story behind these numbers. Hmm. Yeah. नहीं, हाँ, मेक सेंस भाई। जस्ट आई थिंक काफ़ी अच्छा था यार। आई थिंक थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल सच थिंग्स इन अ डिटेल। होपफुली दिस इज गोना बी हेल्पफुल फॉर समवन मे बी हु इज जस्ट जिसने अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी और लुकिंग कि किस डोमेन में जाना चाहिए। एंड गाइज, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, I know Harsh reverts very like he's good in reverting. So you guys can ping either of us if you still have any questions. I would like to help that, and stay connected for the next video. We'll be covering the maybe internal audit in the next video. So yeah, thank you guys. Thank you Harsh for joining.